Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, this is me, Wajidullah, and you are watching EnglishVocabBuilder.com. Viewers, today I came with some of important Pakistan affair MCQs. आज मैं बहुत ही important and compulsory पाकिस्तान अफेयर्स की यानी पाकिस्तान स्टडीज़ की MCQs लाया हूँ जो कि हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं यानी NTS है, PST, CT एट्सेट्रा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वहाँ पे हमारा ये MCQs हमारे काम आ सकते हैं, हमको हेल्प आउट कर सकते हैं. So let's see one by one MCQ. The first MCQ is how many seats are there in the Senate of Pakistan? ये कह रहा है कि पाकिस्तान के सेनेट में हमारे पास कितने मेंबर्स हैं. So the correct answer is 104. हमारे पास पाकिस्तान की जो सेनेट है वहाँ पे हमारे पास 104 मेंबर्स हैं. The second MCQ is the length of Siachen Glacier is 70 kilometers, 71 kilometers, 72 kilometers and 73 kilometers. ये हमारे पास चार ऑप्शंस है. So but the correct answer of the length of Siachen Glacier part is 72 kilometers. हमारे पास जो करेक्ट आंसर है जो कि हमें ये कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर का टोटल लेंथ कितना है. सही है. तो हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर का लेंथ 72 किलोमीटर्स है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स सी ऑन अनदर स्लाइड. अच्छा, so the third MCQ is how many seats are there in the Senate of Pakistan? We have already discussed this third number MCQ in the previous slide. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास जो अपर हाउस है या जो सेनेट है वहाँ पे हमारे पास 104 मेंबर्स है टोटल. और इसके बाद जो फोर्थ नंबर MCQ है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हुआ. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है. 12 मार्च 1947, 12 मार्च 1948 एंड the third one option is 12 March 1949 and the fourth one is all of the above. इसमें जो हमारे पास C नंबर ऑप्शन है it's the correct answer for this question क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश हुआ था यानी पास हुआ था. ठीक है. और ये प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने पेश किया था. सो लेट्स सी द फिफ्थ वन. Let's see the fifth one MCQ. Fifth one MCQs में ये कह रहा है कि इस्लाम was declared as a state religion in the constitution. कि कौन सी constitution में इस्लाम is a state religion declare हुआ था. So the first one option है 1948 and 1956, 1962 and the fourth one is 1973. यहाँ पे मैंने 1973 का जो आइन है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है. इट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम डिक्लेयर हुआ था इज अ स्टेट रिलीजन. ठीक है. द सिक्स्थ वन MCQs हमारे पास है फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन. ये हमारे पास 11 अगस्त 1947 में द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारे पास हेल्ड हुआ था. और इसके अलावा देखते हैं 7th नंबर MCQ. So let's see the official language of 1956 Constitution. Urdu was not the official language of 1956 Constitution and Bengali was not the official language and English and Urdu were also not the official languages. But the correct answer is Urdu and Bengali, both of these languages were declared as the official languages of Pakistan. ये दोनों जो ज़बानें थी ये हमारे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर हुई थी 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में. सो लेट्स सी अनदर.
So let's see 8 number MCQs. 8 number MCQs में है when the capital of Pakistan was changed from Karachi to Islamabad. यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जो दारुल हिरापा है, जो कैपिटल है, ये कब कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, पेपर में इसी तरह के ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है द 1959 में, यानी 1959 में हमारे पास पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ। यहाँ पे एक ऑप्शन है 1953, 1956 एंड 1962, बट द करेक्ट आंसर इज 1959 में हमारा कैपिटल चेंज हुआ था कराची से इस्लामाबाद में, ठीक है। The ninth number MCQs as how many seats are there in the National Assembly of Pakistan, कि पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में कितने सीट्स है, कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में हमारे पास 342 मेंबर्स होते हैं, यानी 342 मेंबर्स आर देयर, ठीक है। और इसको नेशनल असम्बली को हम ठीक है लोअर हाउस भी कहते हैं, यानी इट्स आल्सो नोन एज लोअर हाउस, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ द हाउस भी हम इसको कह सकते हैं, सही है। सो लेट्स सी द 9th 10 number. So, which country is the largest export partner of Pakistan? China, Saudi Arabia, Saudi Arab, and United Kingdom. But the United States is the correct answer for this. I have already highlighted this, but I have just made the pattern are here. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है कि पेपर में इस तरह MCQs आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी पाकिस्तान के साथ जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है वो है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। 11 नंबर MCQ को देखते हैं। विच कंट्री एज द लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की साथ जो लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर है वो कौन सा मुल्क है, ठीक है। सो यहाँ पे चाइना हमारे पास लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर में आता है, ठीक है। नाउ सी अनदर स्लाइड. So now let's see the 12th number of MCQ. When was natural gas discovered at सुई बलूचिस्तान? ये जो हमारे पास नेचुरल गैस है, ये तो जाहिर है कि हमारे पास सुई में है। सुई एक जगह का नाम है बलूचिस्तान में, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि कब हमारे पास जो नेचुरल गैस है ये डिस्कवर्ड हुआ था एट सुई बलूचिस्तान में, ठीक है। So the first option is 1950, 1952, 1953 and 1954. But the correct answer is 1952. 1952 में हमारे पास एट्सुई बलूचिस्तान में जो नेचुरल गैस है ये डिस्कवर्ड हुआ था 1952 में। The correct answer is 1952, ठीक है। Let's see 13 number of MCQ. The State Bank of Pakistan on 15 February 2022 launched Rast Instant Payment System. So it's systems to person, person to person, person to system, system to system. I have already highlighted this one. So person to person जो सिस्टम था रास्ट इंस्टेंट, ये लंच हुआ था ऑन 15 फरवरी 2022 में, ठीक है। लेट्स सी अनदर स्लाइड. So let's see the 14th number of MCQ. इसमें यह है कि bicameral system of legislature was introduced in Pakistan under the constitution of, यानी इसमें इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी constitution में bicameral system था, यानी bicameral legislature system लंच हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। सो हमारे पास जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो बाइकैमरल सिस्टम था ये लंच हुआ था, सही। एंड द 15 नंबर ऑफ MCQ इज पाकिस्तान जॉइंट डिफेंस पैक्ट्स विद एंग्लो अमेरिकन वार एन। सो ये पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था ये डिफेंस पैक्ट्स अमेरिका के साथ
1954 में, ठीक है, 1954 is the correct answer. So let's see the 17th number of MCQ. So let's see the likeness of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's favorite game was billiard. It's mean cricket was not, tennis was not, and hockey was not the favorite game of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. But the billiard game was the favorite game of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The oldest barrage of Pakistan, Gandu barrage, was not, is not. Tainsa barrage is not the oldest barrage of Pakistan, but the correct answer is the Sakar barrage is the oldest barrage of Pakistan. So let's see and the next and the second lecture. Bye bye. Thank you all for watching my videos concentrately. So thanks you all, love you all. Thanks again.